Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart IELTS. So today I have prepared for you a full IELTS academic writing. So I have selected task 1, that is table chart, because there are some students who are demanding for table chart. So before starting the video, if you are new on my channel, then press the bell icon for more notifications of my next video. And firstly we discuss about the how the writing task 1 meets requirement that IELTS examiner use to mark your essays. मीन्स फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी टास्क 1 के लिए एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टास्क 1. स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसका. ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स विद इन 20 मिनट्स. फर्स्ट थिंग आपकी है राइटिंग टास्क 1 के अंदर 150 वर्ड्स में है, आपको कंप्लीट करना है और विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके लिए 4 आपके पैराग्राफ रहेंगे. फर्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन का रहेगा. मीन्स यू हैव टू राइट बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हाट यू हैव इन टास्क 1. मीन्स आपको जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपकी टास्क 1 के अंदर दी हुई है. यू जस्ट हैव टू पैराफ्रेज द स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन. ओके, सेकेंड थिंग आपकी रहेगी ओवरऑल. ओवरऑल मीन्स यू हैव टू राइट ओवरऑल ऑफ द पिक्चर. पिक्चर का आपने ओवरऑल राइट करना है. ओके, देन वी हैव टू राइट BP1. BP1 यानी बॉडी पैराग्राफ 1 हमने राइट करना है. वी हैव टू राइट सम इंफॉर्मेशन in the BP1 and then in the BP2 we have to write other informations. Okay, now we discuss a table chart with sample answers. I put my all efforts into making of this video and I really hope you are gonna like it. If you do, please put a like. Okay, now let's get started. IELTS academic writing task 1, band 9 sample answers. Okay, so we have a task. What is the information here? The table shows the percentage of mobile phone owners that use features on mobile phones. Means यहाँ पे एक टेबल चार्ट है. टेबल चार्ट शोज कर रहा है परसेंटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन ओनर्स की दैट यूज़ फीचर्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स. मतलब मोबाइल फ़ोन के फीचर्स की. ओके, सो हाउ वी कैन राइट इट. So we have information. Firstly we have to write the introduction, and in the introduction we have to just paraphrase the information of the statement. Okay, so firstly we write the table chart provides information about. information किसके बारे में दे रहा है. the types of function that were used by mobile phone owners across 7 categories. यहाँ पे 7 categories दी हुई हैं. ओके, इन 3 स्पेसिफिक ईयर्स. 3 स्पेसिफिक ईयर्स दिए हुए हैं 2006, 2008 एंड 2010. सॉरी. Okay, so now we have to write overall. In overall we have to write overall it can be observed that the most frequent mobile phone usage was for making call. सबसे ज़्यादा इसमें किसका डाटा दिया हुआ है. मेकिंग कॉल्स का है. It is also noticeable that there were no figures provided for searching the internet and recording video in 2006. और एक और चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि जो रिकॉर्डिंग वीडियो है और जो सर्च द इंटरनेट है उसका कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है 2006 के अंदर. यानी कि ओवरऑल में हमने 2 थिंग्स दिए, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम. यानी मैक्सिमम किसके लिए यूज़ किया गया था, मेकिंग कॉल्स के लिए, और मिनिमम किसके लिए था, सर्च द इंटरनेट और रिकॉर्ड वीडियो, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है. Okay, so now we discuss about the BP1. In the BP1 we just have to write some informations of the task. As can be seen from the chart, the use of mobile phones for calling was significantly higher than the other 6 functions, with 100% usage levels in both 2006 and 2008 and 99% in 2010. कि चार्ट में आपको क्या दिख रहा है. यहाँ पे चार्ट में जो सबसे ज़्यादा डाटा है वो मेकिंग कॉल्स का है 2006 में, और 2008 में भी मैक्सिमम डाटा है दूसरी 6 फंक्शंस की बजाय. ओके, जो इसका 2006 और 2008 के अंदर है वो 100% डाटा है, और जो 2010 के अंदर वो 99% डाटा है.
Okay, the other three features, which include photo taking, sending text messages, and playing music, all had a slight increase in the percentage of usage frequency by the cell phone owners. कि यहाँ पे मैक्सिमम तो हमने दिया है कि मेकिंग कॉल्स का है, जो मिनिमम है, मिनिमम का जो दूसरों का है टेकिंग फ़ोटोज़ का है, सेंड मैसेजेस का है और प्लेइंग म्यूजिक का है। इनमें क्या स्लाइट इंक्रीज हुआ है जस्ट, यानी कि यहाँ पे जैसे 2006 के अंदर टेकिंग फ़ोटोज़ का 66 था और 2008 में 71 हुआ है और उसमें 76, यानी जस्ट 5 का डिफरेंस रहा है, यानी स्लाइट इंक्रीज हुआ है। ओके, सो हम अब BP2 की बात करते हैं। BP2 में जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशंस है जो रहती है वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है BP2 के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट, रिकॉर्डिंग वीडियो हैड द लार्जेस्ट राइज इन यूसेज फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग विद 9% इन 2008। कि जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसमें लार्जेस्ट राइज था यूसेज फ्रीक्वेंसी का, जो स्टार्ट हो रहा था 9 से, और by 2010 this figure went up fourth, told with 35% of the owners using the phone for video recording। कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए डाटा 2006 के अंदर तो कोई डाटा ही नहीं था और 2008 के अंदर 9 था और 2010 के अंदर 4th हो गया, यानी उसका 4th। okay students, so this is a writing task 1, and student, if you have doubt in the writing task 1 then you can write in the comment box, and if you want more and more videos regarding writing task, so you can write in the comment box, and please share and subscribe to channel more and more for more updates. And now thanks for watching.